वेलकम बैक टू वीकेंड और माय नेम इज गौरव। नाम तो सुना होगा। अब देखिए वक्त आ चुका है आपको खाना खिलाने का एंड बिलीव मी सबसे ज्यादा मजा मुझे तब आता है जब मैं लोगों को खाना खिलाता हूं। इसलिए मैं बड़ा ढूंढ के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स लाता हूं ताकि जितना मजा मुझे आया है उतना ही मजा आपको भी आए ना। आपका रेस्टोरेंट जिसके बारे में मैं काफी कुछ ऑलरेडी सुन चुका हूं। दिस इज द न्यू रेस्टोरेंट अबाउट 6 months ओल्ड। आई हैव हर्ड गुड स्टफ अबाउट इट। इट्स कॉल्ड पिंड दा ढाबा। इसलिए फाइनली मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब यहाँ पर खाना चख कर खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि पिंड दा ढाबा आपको ऑथेंटिक पंजाबी ढाबा फूड देता है या नहीं। If you want to experience real Punjab here in Dubai, do try out Pind Da Dhaba in the heart of the city at Karama. From makki di roti and sarson da saag to Lori to Basant, Baisakhi and Teej, the folk tales and Punjabi songs, everything that's Punjabi has been spun into the eclectic decor. The interiors of the restaurant has appealing little elements to grab your attention. Starting with the stairs, where beautiful colorful bangles are installed along with kite-flying thread rolls and lit brass kettles. Pind Da Dhaba has a dim light concept, similar to a typical Indian dhaba. In the corner of the venue is a very special auto rickshaw table to dine in. You can get this one only on first come, first serve basis. The other side has a beautifully decorated setup of a truck, a hand pump and the gola corner. Although I really wish this wasn't just for decorative purposes and they actually churned out some of those syrupy, icy, lip-smacking golas. The restaurant managed to make me feel like I was in a slightly sophisticated highway dhaba somewhere in Punjab. पिंड हम गाँव को बोलते हैं पंजाबी में। पिंड गाँव, तो गाँव को हम लोग पिंड बोलते हैं। ढाबा इट्स रोड साइड ढाबा से देयर कैफेटेरियाज। तो ये एक पिंड दा ढाबा हमने नाम दिया गया जो कि पंजाबी कॉन्सेप्ट को काफ़ी सूट करता है। वी आर सर्विंग ऑथेंटिक डिशेज लाइक ढाबा मीट इज़ देयर, पंजाबी कुकड़ इज़ देयर, सरसों की साग इज़ देयर, मक्की की रोटी इज़ देयर। तो दीज काइंड ऑफ डिशेज वी आर सर्विंग विद अस। So I've got myself a table here at Pind Da Dhaba and this is not just any other table. This is the best table in the house. This is a proper rickshaw. By the way, they have a name for this table. It's called Dhanno. And Dhanno पे बैठने के बाद of course रिक्शा की याद तो आई है। साथ में मैंने इनका जब मेन्यू खोल के देखा तो it stays true to the name Pind Da Dhaba. इसका पहला पेज देखते बड़ा मजा आ गया। When I read कि पीने के लिए आपके पास जलजीरा है, शिकंजी है, छाछ है। So very Punjabi in nature. लस्सी है, लस्सी मनपसंद। I'm going to take a look at the menu and decide कि मैं अपने लिए क्या मंगाने वाला हूं। Now for the food, Pind Da Dhaba has a very good vegetarian and non-vegetarian menu. For starters, we ordered the Jhinga Tandoori, char grilled prawns marinated with selected spices and curd, chicken tikka, well this needs no introduction, and the fish ajwaini tikka, which was essentially juicy fish chunks marinated with yogurt, tandoori spices and flavored with ajwain. So it's time now to dig into the food that's been served to me. I'm going to start with the fish. The fish ajwaini tikka. This fish ajwaini tikka, nice, very tender, and beautifully marinated. Love this aftertaste. क्या बात है। So this has been an absolutely crazy start. I have loved what I've had so far. It's nice, चटपटा and a little bit spicy as well. There's a way of finding out कि जो आपको खाना सर्व किया जा रहा है वो पंजाबी है या नहीं। कई आपने ये कहावत भी सुनी होगी, पंजाबी बाय नेचर। That is, पंजाबी जो होते हैं खुले दिल के होते हैं और खुले हाथ के होते हैं। It's very rare that you go to a Punjabi house or a Punjabi restaurant for that matter and get small pieces. And when you see the servings there, you realize nice big chunks of chicken as your chicken tikka, nice big chunks of fish for your fish tikka. So that pleases your eye to start with, and उसके बाद क्या बढ़िया marination किया है। The thing that I really like is the ajwaini tikka. Sort of melts in your mouth and leaves you speechless. The main course consisted of a yummy vegetarian gravy dish, the Diwani Handi, which is a mix of fresh-cut vegetables cooked in a spicy spinach gravy and some traditional spices and then seasoned with cream. For non-vegetarians, do try the dhaba meat, a truly village delicacy of raw Indian mutton slow-cooked for hours in a spicy tomato and onion gravy. And then there was the authentic Punjabi kukkad in a thick gravy made of chopped masala,
chicken mince and garlic simmer together with boneless chicken chunks and Punjabi spices. To accompany these, I had the Amritsari kulcha and the butter naan. When you go to Pind Dhaba, my recommendation is do try the Amritsari kulcha and you won't regret even one bite. Okay, so here's my Punjabi खाना. This looks very very delicious. ये देखकर मुझे भूख लगाई है. Although इससे पहले ही मैंने बहुत सारे स्टार्टर्स दबाए हैं, पर अब खाना आ गया तो इसे खा लेते हैं. So now I'm going to have my khana with the special Amritsari kulcha. This is a special that they have here. It's stuffed with aloo and they've got a secret masala that they use. Can't wait to taste this. What a start. Maza aa gaya. Wow. Okay, now this has got a double taste in it. It's a gravy that has chicken, used chunks of it, and it's got a little bit of minced chicken as well, and it gives such a fantastic taste. Nice, rich gravy. Super. I'm trying in the dhaba meat. You know, this is one of those things that's consistent with every dhaba that you will go to, and this gets better with time. यानी कि आप अभी खा रहे हैं और जब 2 घंटे बाद खाएंगे, this will taste even better. It's one of those things जो ढाबे में बना के रखा जाता है and then it keeps cooking over a period of time. So it depends on when you've landed at the dhaba, it'll taste that way, and they've done a great job of this. ओ पापा जी, ये जनरली जब आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं तो आप कहते हैं वो माँ, लेकिन जब आप पंजाबी खाना अच्छा खाते हैं तो गौर से ओ पापा जी, क्या बढ़िया खाना खिलाया, मजा आ गया खाना खा के. You know, this sort of food reminds you of the food that you would taste if you were traveling in Punjab. रास्ते पर रुककर किसी ढाबे पर आपको ऐसा ही खाना मिलता है, ऐसी चिकन, ऐसी मटन, ऐसा ही वेजिटेरियन खाना भी मिलता है. फैंटास्टिक स्टफ दैट्स बीन सर्व्ड हियर. ये खा के मुझे एक बात और रियलाइज हो गई है. अब समझ में आ गया कि भांगड़ा जो है वो ऐसे कूद के क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत खुदाई नहीं करेंगे तो भैया आपका सोना गारंटीड है. तो ये बढ़िया खाना खाने के बाद मैं डेफिनेटली सोने नहीं वाला हूँ ना. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यही रिक्शा मुझे ले जाएगा, क्योंकि इस रिक्शा में तो ड्राइवर ही नहीं है. मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बढ़िया मुझे गाजर का हलवा दिया जाएगा और उसके बाद मैं खुद चला जाऊँगा. And to end this fantastic meal, I had gajar ka halwa. Now this also was keeping in trend with the Punjabi theme: hot, sweet, silky and lip smacking. So that's the end of a fantastic meal here at Pind Dhaba. What a meal this was. You know, rich gravies, chunky pieces of chicken and fish, some very, very flavorful vegetarian dishes as well. So if a good Punjabi meal is what you're looking at, Pind Dhaba definitely is one good option. I'm going to go from here as much as I don't want to, and I want to have another meal, but not today, some other time maybe. Till I see you next week, no sawal, no doubt, sabka solution, weekend out. It's a K Company production.